everyone. Today we'll be discussing the legal reasoning segment of CLAT 2020 paper. ठीक है, so the first passage was basically related to COVID-19 pandemic and the force majeure clauses. ठीक है, so this passage was yes pretty lengthy, जो कि टाइम लगा होगा इसे रीड करने में, but it was predictable, all right, क्योंकि कंसोर्शियम ने जो सैम्पल पेपर दिया था उसमें भी ये पैसेज दिया गया था. ऑलराइट, सो देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका नॉलेज लेते हैं जो आपके पैसेज में भी लिखा है. बट बेसिकली फोर्स मेजर क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें कि आफ्टर द मेकिंग ऑफ प्रॉमिस some supervening impossibility comes into the picture, because of which the execution of the contract becomes impossible. All right, लेकिन जब आप इस पूरे पैसेज को रीड करेंगे then you will understand that force majeure clause basically वो भी हैं जो कि एक्ट ऑफ गॉड में कवर होते हैं. जैसे आप नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में सुनते हैं, यहाँ पे आपको इसका मेंशन मिलेगा, लेकिन और भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जो कि रेंडर कर देते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड. ऑलराइट, सो फोर्स मेजर इज बेसिकली दोनों चीजें हैं, एक्ट ऑफ गॉड भी है एंड नेक्स्ट कुछ इवेंट्स भी हैं विच रेंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज completely void, whereas there is different clause also being mentioned in your passage which was material adverse effect clauses. all right, so ये जो है ये जो clause है आपका, ये basically allocation of बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिस्क के ऊपर है. सो देखिए, आप यहाँ पे ये डिफरेंस लिखा हुआ था दैट MAC clauses applies to the allocation of risk before their closure or completion. The point is force majeure clauses क्या हुए, ये basically या तो act of God है या तो कोई और supervening impossibility है जिसकी वजह से contract void हुआ. And MAC clauses are basically those clauses which talks about या which contemplates upon the losses which can be there, ठीक है, because of these supervening impossibility thing. And वो जो contemplation of loss है वो अपने बिजनेस पे या जो भी जिस चीज के रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर क्या असर आएगा. सो बेसिकली ये दोनों चीजें ये कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बताए गए हैं आपके पैसेज में, ठीक है. अगर आप इसके आगे देखोगे तो सबसे लास्ट में, अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द पैसेज बोला गया दैट फोर्स मेजर क्लॉज इज नॉट अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट. इट्स नॉट अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट जो कि आप हेड टू टो एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में हर कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई करोगे. एब्सोल्युटली नो. So basically force majeure clause का जो interpretation होगा that will depend upon the facts and circumstances which are encompassed within that contract. So it will be seen, ठीक है. So the point to be noted is that it is not a generic concept. It will depend upon different contracts, different facts and circumstances, and thus different interpretations has to be drawn. All right. And जो आपके passage में जो last line लिखा था वो basically ये था कि अगर भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉज के बारे में नहीं लिखा गया है देन एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड विल बी फॉलोड. एंड वो एप्लीकेबल लॉ कौन सा है? अंडर द कमर्शियल लॉ. हम सबको पता है द कमर्शियल लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है विच वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1872. ठीक है, सो क्या चीजें हमें समझ में आई इस पूरे पैसेज के दौरान कि फोर्स मेजर क्लॉज क्या होता है, मैक क्लॉज क्या होता है. थर्ड इज कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होने चाहिए, फोर्स मेजर के अलग अलग वर्डिंग्स होने चाहिए. कुछ खास वर्ड्स होते हैं जो कि समझाते हैं दैट यस दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज दीज काइंड ऑफ क्लॉजेस जिसमें कि प्रिवेंटेड, hindered, delayed, ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं कोट एंड कोट में जो आप पैसेज में देख सकते हैं. एंड सबसे लास्ट में ये पॉइंट लिखा गया दैट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर फोर्स मेजर क्लॉज इज नॉट देयर देन व्हाट विल बी द फेट ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स. सो द पॉइंट इज दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी गवर्न्ड बाय द बेसिक लॉ एप्लीकेबल इन द कंट्री विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ऑल राइट, सो इसके आगे अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. ऑल राइट, सो
Let's see. And yes, this excerpt was taken from Business Today. All right. So ये again ये एक बहुत ही important point होता है क्योंकि reading part is very very important. ठीक है. So at the end of the video, so आप end तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि end of the video में हम लोग कुछ conclusions draw करेंगे. Basically उन लोग के लिए जिनको कि आगे के एग्जाम्स को फेस करना है, बेसिकली 2021 में जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी में अगर आप हैं तो आपको क्या चीजें बिल्कुल करनी चाहिए. ठीक है. So at the end of the video we'll be discussing about that also. All right. So chaliye now let's see your questions which was based on this particular passage. First is based on the author's argument in passage above, which of the following is correct? First was force majeure clauses generally have a uniform impact on the performance of contracts in all the cases. Answer is no. ये नहीं था that it does not have a uniform application. All right. So different contracts entailing different facts and circumstances and thus different interpretation of force majeure has to be drawn. ठीक है. So second point is the impact on the performance of contract by the usage of force majeure clause is dependent upon the way such clauses have been constructed in a particular contract. So yes, so far so good. यहाँ तक B option is correctly worded as per your passage and as per the understanding drawn by your passage. All right. Third option है both force majeure and MAC clauses have similar impact on the performance of contract. There is a thin line difference between these two concepts, guys. Force majeure was basically the events or the circumstances which rendered a contract void, whereas MAC clauses were merely contemplation of losses on the business of the contract. All right. So आपका ये नहीं जा सकता certainly आप all of the above को deduce नहीं कर पा रहे हैं, then go by option number B, correct answer दिया हुआ था. ठीक है. So चलिए next question पे चलते हैं. ठीक है. So next question is, imagine there is a domestic commercial contract for supply of certain goods for certain price between A and B. There's a domestic commercial contract for supply of certain goods for certain price between A and B. However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure event, and the contractual document does not contain the force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event like that of COVID-19? So last line of your passage was regarding the same situation, that if in a contract nothing has been talked about, the force majeure thing, ठीक है, then what will be the fate of these contracts if something happens to be like this? अगर कोई ऐसा इवेंट आ जाता है और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉजेस नहीं थे, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से आगे बढ़ेगा. ठीक है. सो वहां पे हमने ये पॉइंट डिस्कस भी किया था दैट जो आपका एप्लीकेबल लॉ है एज फार एज कमर्शियल लॉ इज कंसर्न्ड, सो वो लॉ का एप्लीकेशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे. ऑलराइट. सो क्लियर आंसर था गाइज. एनीवेज बाकी भी ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं. एज द parties did not negotiate on the force majeure clause, either of them cannot take an exception to the breach of contract. Next is the parties can invoke the material adverse change clause. ठीक है. And next is, in absence of such clauses in the contract, the courts may resort to the applicable law, that is the Indian Contract Act 1872, to give relief to the parties, and D was none of the above. Obviously आपका option number C is the safest answer here, which was given in the key also, answer key also. So that is fine, absolutely fine. And चलिए, so moving on. Next is in the same fact situation as mentioned above, with a modification that there is a force majeure clause in the contract between A and B. Let us suppose that B, who was to supply goods to A on certain date and time, faced issues in relation to procurement of goods due to mill strike and also because of rise in prices of goods. In this case, can B claim the suspension of performance of contract on the basis of the force majeure clause? Now guys, this question needs to be a
appreciated by you, because ये question directly आप इसका आंसर इन्फर नहीं कर सकते as per the passage, because there is a knowledge required. So जिस कैंडिडेट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में void कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझा होगा, आई एम वेरी श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं that impossibility and commercial hardship are two different things. There is world of difference between saying that this thing has become completely impossible for me and in saying that this thing is become very very difficult for me to perform. As long as difficulty है, इसका मतलब है impossibility नहीं है, जिसका further मतलब है कि आपका contract valid चल रहा है. But yes, जैसे ही कोई ऐसा event intervene कर रहा है जिसकी वजह से अब आप अपने contract को logical end पे लेके जा ही नहीं सकते, it is beyond the control of both the parties. ठीक है, जब तक वो सिचुएशन नहीं आता तब तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की तरफ नहीं जाता है. ठीक है, सो अगर मान लीजिए मिल स्ट्राइक था, अगर मान लीजिए राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स था, सो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा हार्डशिप वाले पॉइंट हो सकते हैं अपॉन द पार्टीज. चलिए, द सिचुएशन एज कॉन्टेम्पलेटेड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट might change and there can be a different situation altogether, but अगर उस situation में impossibility नहीं है and सिर्फ hardship है, difficulty है, तो आप कहोगे contract valid है. ठीक है, सो आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, yes B can depending upon the way the force majeure clause is worded. B कह रहा है such situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectations and hence B cannot invoke the same. It is merely a case of commercial hardship. C कह रहा है B can invoke the force majeure clause as the clause is too broad to cover such situations. D is none of the above. Again, based on the knowledge part also. So guys, this is very very important. Don't think that the legal knowledge segment has been completely ruled out. It's the whatever facade was created because of the pattern change news and all those stuff is has been laid to rest now. So one needs to understand that you need to have certain prior knowledge also in order to fully comprehend, ठीक है, the entire passage, and until and unless you decode your passage very well, ठीक है, तब तक आंसर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपका अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकली द MAE प्रोविजन इन एन अग्रीमेंट contemplates events which if they occur or are likely occurred would have a materially adverse change or effect on the assets, business, property, liabilities, financial condition, results, operations of the target, or that affects the ability of the transacting parties to consummate, ठीक है, the transaction or the validity or enforceability of the transacting parties to its rights and remedies under the transaction documents. Which of the following sample clauses in a contract resembles an MAE clause? See, MAE clause is different, guys. All right, MAE basically वो clauses है जहाँ पे you have to contemplate upon the losses, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस पे हुआ है because of that force majeure thing. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपसे पूछा गया कि ये दोनों सैंपल्स में से कौन सा MAE क्लॉज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. ऑलराइट, सो आप फर्स्ट पॉइंट की तरफ अगर देखें, इन द इवेंट आइदर पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म्स ऑफ दिस अग्रीमेंट बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, स्ट्राइक, इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, फेलियर और डैमेज रीजनेबली बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, सच पार्टी शैल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस टू द अदर for any damages resulting from such failure to perform. Guys, ये sample clause MAE clause के बारे में कहाँ था? Where was the contemplation of loss? Nowhere. All right, so ये language basically force majeure का था. So had your question been क्या ये clause force majeure का clause है, तब आप definitely कहते yes. But क्या ये
MAE क्लॉज है, दैट इज नो. ऑलराइट, सेकेंड को भी देख लेते हैं. एक्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑब्लिगेशंस अंडर दिस अग्रीमेंट, no party shall be liable for, nor such party shall be considered in breach of this agreement due to any failure to perform its obligations under this agreement as a result of cause beyond its control, including any earthquake, labor problem, unavailability of supplies. ठीक है. सी यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फोर्स मेजर का कहीं ना कहीं मेंशन मिल रहा है. सो अगेन देयर इज नो contemplation of loss as such given under this sample clause as well, but yes, it was again a reference to what we call as indemnity clause. And yes, along with indemnity clause there was a mention of force majeure over again. All right, so none of them corresponded to the MAE clause, guys. ठीक है. So चलिए, with that हमारा ये first passage gets over. अगर first passage को आप analyze करें तो ये जरूर था कि ये predictable था, lengthy था, टाइम लगा होगा obviously, and क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एक palpitation भी होता है, उसमें आपको टाइमली बेसिस पे चीजों को सॉर्ट आउट करना है, वो भी वहां पे जब इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर हो. सो यस, प्रॉब्लमैटिक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू द पॉइंट इज इफ यू हैड अ प्रीवियस नॉलेज रिगार्डिंग द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टफ, right, then this passage was easy to decode. All right, so there were questions wherein yes, you need to appreciate. So the requirement out of your first passage in the legal reasoning zone was that first you need to understand the difference between force majeure and MAE clause. Next was that question in which answer was commercial hardship thing. वहां पे वो directly आपके passage से infer नहीं हो रहा था. Some sort of knowledge was required. जिनको ये knowledge होगा that commercial hardship and impossibility are two different things to be appreciated, उनको जरूर edge मिला होगा उस आंसर में. ठीक है. So accordingly, हाँ, next question was अगर आप MAE clause को समझ गए then ये वाला question आप easily डन कर सकते थे. All right. So with that we are moving on to the next passage. All right. So okay, so next passage is basically the issue of obscenity has vexed the courts in India and abroad for a long time now. The intriguing question has always been the same. ठीक है. So basically इस passage में you need to understand two different tests which were applied. One was what is known as Hicklin test, which was decided way back 1868 in UK in Regina versus Hicklin case. जहाँ पे आप ध्यान से देखें क्या लिखा है. The Hicklin test बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता था, बट ये चेंज हुआ क्योंकि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ दिस नोशन हैड टू चेंज एंड विल सी जस्ट इन अ मोमेंट विल सी हाउ दिस गॉट चेंज और रादर हाउ दिस गॉट इवॉल्व्ड. ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू हिकलिन टेस्ट द टेस्ट ऑफ obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. So basically Hicklin test was completely dependent upon the audience who was prone to these kind of stuffs. So basically उनकी psychology को देखते हुए obscenity word को डेसिफर किया गया. ऑलराइट, सो ऑब्सेनिटी अगर डिटरमिन करना है तो आपको उस ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा हु इज मोर प्रोन टू रीडिंग दोज थिंग्स और लुकिंग एट दोज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. ऑलराइट, बट इन इंडिया सो सी वी हैव सर्टेन केस लॉज. यहाँ पे रंजीत केस लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1965, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट गाइज बिकॉज नॉवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन माना जाता है. नेक्स्ट इज चंद्रकांता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगेन 1969. दीज टू जजमेंट्स, यस दे आर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. सी अब इस दोनों जजमेंट का जो फाइनल आउटकम था वो ये था कि इंडिया गोज बाय व्हाट इज नोन एज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पे जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड. So according to community standard test,
it was held that in order to, finally determine as to whether this thing is obscene or not, that would be completely dependent upon the complete message and the context of the objectionable scene, film, picture, etc. needs to be examined in order to find out whether an alleged material is obscene or not. ठीक है. So देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है. These judgments indicated that the concept of obscenity, I'm referring to this, these judgments indicated that the concept of obscenity would change, very, very important point, would change with the passage of time, and what might have been obscene at one point of time would not be considered as obscene at a later period. ठीक है. This concept, guys, the what is known as community standards test, जो कि इंडिया में applicable है, ये concept basically obscenity को एक evolving concept की तरह देखता है, whereas Hicklin test एक rigid concept था that something is obscene if the kind of audience who looks at it is likely to take this meaning as something otherwise. अगर ये वो audience उस चीज को वैसे देख रहा है, then आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे ये ऑब्सीन है या नहीं है. बट कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ने बोला कि आप ऑब्सीन कुछ है या नहीं है, ये आइसोलेशन में देखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस कॉन्सेप्ट जस्ट कैन नॉट बी लुक्ड एट इन आइसोलेशन. इट हैज टू बी एडजस्ट अराउंड द एंटायर पिक्चर ऑफ द कॉन्टेक्चुअल societal norms, and norms we evolve. Does our society evolve? And as we have seen in so many judgments, in so many case laws, जरूरी नहीं है एक चीज जो एक टाइम पीरियड पे obscene है वो दूसरे टाइम पीरियड के लिए भी obscene होगा. There are numerous examples जहाँ पे we have seen the changing interpretations of what is so called obscene, but now it is no more considered as obscene. All right. So community standard test is basically the evolving concept. It is not like the straight jacket formula concept. No, it evolves because the contextual norm and societal norms do change, and according to the changing norms, what we consider as obscene, what we do not consider as obscene has to change. All right. So this concept was more a dynamic concept. It is a dynamic concept, whereas the former test, which was Hicklin test, उसे आप rigid concept की तरह देख सकते हैं because there was no scope of evolvement there. ठीक है. So simply आप उस audience के mindset को देख रहे हो which are more prone towards those publications or towards those works, whatever obscenity work has been in the case, in the issue of the case, whatever. So अगर आपके audience के point of view से देखना है, लेकिन community standard test में उसी चीज को एक wider amplitude पे देखा गया that अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स जो कि उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा होगा उसके रिगार्डिंग आप ऑब्सीन या otherwise आप हेल्ड कर सकते हैं. सो दोनों में डिफरेंस है गाइस. आई थिंक यू अप्रिशिएट दैट हिकलिन कॉन्सेप्ट इज मोर ऑफ स्टैटिक इन नेचर, whereas community standard test is 100% dynamic in nature. All right. So अब इसके basis पे we'll go by the questions. Just a second. 71st question. A daily local newspaper called Ramanand Bazar Patrika, having wide circulation in Anand Nagar, published an article with a picture of Boris Becker, a world-renowned tennis player, posing nude with his dark-skinned fiancée by name Barbara Feltus, a film actress, which was photographed by none other than her father. The article states that in an interview, both of them spoke freely about their engagement, their lives, future plans, and the message they wanted to convey to the people at large. For posing to such a photograph, article picturizes Boris Becker as a strident protester of the pernicious practice of apartheid. Further, it was stated that the purpose of the photograph was also to signify that love champions over hatred. Will the alleged picture classify as an obscene material in India? ठीक है. So guys, the important point is here that in India, do we follow Hicklin test? The passage was clearly stating that in India we follow community standard test, which was according to which the concept of obscenity was dependent upon the contextual meaning, that you cannot look at the stuff in isolation devoid of all the
ancillary meanings attached to it. No, you have to look at it with the overall thing. All right. So यहाँ पे अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो all right, there was nudity. Yes, there was nudity, but the larger picture was apartheid. I think आप समझते हैं, it has a racial concern to it. So अगर एक contextual meaning था तो क्या ये इंडिया में obscene होगा? Answer is so option number A में देखिए, no, according to Hicklin test it will not classify as obscene, but then we are not talking about Hicklin test here. All right. B is yes, according to the community standard test the picture will classify as obscene. No, because nudity was there, yes, but the bigger picture was the racial thing, the racial issue. ठीक है? So again B cannot go. No, according to the community standard test the picture will not classify as obscene, both A and C. All right, so go by C. Yes, because there was a contextual meaning to whatever was being projected as nudity. All right, so since there was a contextual meaning, thus we completely complement the community standard test, and thus it will not be considered as obscene. All right, had it been had the question been about the Hicklin test, then you would have 100% said that okay fine, nudity was there no matter whatever the contextual meaning was, but since nudity was there आप कहते it is obscene. But that guys, that is the difference between Hicklin test and the community standard test. All right, so चलिए moving on. The difference between Hicklin test and community standard test is A. The former focuses on the susceptibility of the minds of individuals to get corrupted, while the latter hinges upon the context, intended meaning, and contemporaneous social cultural environment of the society. Very nice, very well worded, and completely it said the complete difference between the two. All right, B को भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी all of the above का option है, there your requirement is that you need to check all the options guys. All right, so आप immediately A पे ना जाएं, कभी भी ये सारे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए MCQs में, ये चीजें भी मैटर कर जाती हैं. सो बाकी के भी ऑप्शंस को पढ़िए. एज पर हिकलिन टेस्ट, अ न्यूड पिक्चर ऑफ अ वुमन पर से का मतलब क्या होता है? सो पर से मीन्स ऑन इट्स ओन. ऑलराइट, सो ऑन इट्स ओन कैन बी obscene, while as per the latter the picture should be suggestive of depraved mind and designed to excite sexual passion in persons who are likely to see it. Yes, okay, so ये भी इसने भी exemplify किया है दोनों concepts को. Alright, C कह रहा है the former considers obscenity as the former, that means guys Hicklin test we are referring to. Hicklin test considers obscenity as a changing concept with changing times, while the latter does not. So this is blatantly wrong guys. Alright, so इसका just opposite is the correct proposition. Alright, so we cannot go by all of the above. So B से बेहतर language A का है, जहाँ पे you get everything. Alright, the entire conceptual difference between the two tests. Alright, so better go by A, no problem at all. Next is, next question is, the issue of obscenity is fundamentally related with which of the following? Guys, now again see, the point is polity का एक basic knowledge यहाँ पे important है, and I think ये question legal knowledge से related था. Nothing was given as far as the passage was concerned, but yes, again you have example that certain knowledge is also required out of you guys also. ठीक है, so ये सब नहीं होना चाहिए कि pre-existing knowledge बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, completely खत्म हो चुका है, the entire thing will be given in your passage. Absolutely no, they'll be asking you something which will be based upon your knowledge. All right, so ये बहुत ही easy question I would say, because it is it is a matter of speech and expression. All right, so it's a matter of speech and expression of an individual, whatever the question, the issue of obscenity. ठीक है, so it's a sort of expression only which is covered under 19(1)(a). All right, so again कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, consider the following situation, choose the correct option as per the Hicklin's test. So guys, we need to examine this question as per Hicklin test. All right, so yes, Hicklin test we have to see. A movie scene where there are rows of Jewish naked men and women shown frontally being led
into the gas chambers of Nazi concentration camp. Not only they are about to die, but they are stripped of their basic dignity in the last moments of their life. Second is the controversial movie scene of Phulan Devi, the bandit queen, where she is paraded naked and made to draw water from the well within the circle of 100 men. Guys, the point is, अगर ये question community standard test पे होता, then I think you appreciate that both of the instances they do have their contextual meaning. ठीक है? So अगर यही question community standard test में होता, then neither of them were obscene, but the question was related to the Hicklin test, and according to which obscenity is obscenity, and in order to adjudge whether something is obscene or not, you have to devoid all the contextual meaning, whatever there it can be, and you have to devoid all those contextual meanings, and then you have to see, looking at the kind of audience which are prone to these objects. All right, so yes, there was nudity then. ठीक है? So आप contextual meaning को subtract कीजिए, there was nudity, hence both of them will be considered as obscene according to the Hicklin test. ठीक है? चलिए, सो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन था, बिकॉज अब सी दिस इज द पॉइंट गाइज कि प्रीवियस नॉलेज कैन बी एट टाइम्स problematic also. Why? Because in this question I have received so many responses where people are like, on the same facts, Honorable Kerala High Court has given a verdict jahan pe there was a social activist by the name of Ruhina Fatima, and exactly the same facts, and the Honorable Kerala High Court has held her as per the charges of obscenity and child pornography. But the point is, see, previous knowledge fine, ठीक है, जिनको legal क्या चल रहा है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी लीगल नॉलेज के बारे में उन्हें आइडिया है, उन्हें ये केस लॉ फैक्ट को पढ़ते के साथ ही समझ में आ गया होगा कि ये रूहिना फातिमा केस के ऊपर बेस्ड था. बट अगेन सी, वन थिंग इज आई शुड हैव प्रायर नॉलेज, एंड नेक्स्ट थिंग इज वेयर आई हैव टू अप्लाई दैट प्रायर नॉलेज. All right, so यहाँ पे your prior knowledge says that because Kerala High Court held, according on the same facts, Kerala High Court held the lady responsible for the charges which are alleged in the facts also. But the point is, ultimately you are dealing with a passage, and you need to appreciate that on what factor the question is being asked to you. Okay, fine, you have a previous knowledge. It's a good thing for you guys to understand the contemporary legal thing, whatever is happening in the country. All right, whatever judgments and what all important judgments have been delivered by the Honorable Supreme Court and the respective high courts. But then the point is, you have a previous knowledge, and where you actually need to apply that previous knowledge is smartness. All right, is smartness. Why I'm saying smartness? Because it is a matter of your wisdom. ठीक है, कोई चीज जानना गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक पैसेज बेस्ड पैटर्न पे काम कर रहे हैं, आपको ये भी अप्रिशिएट करना होगा कि क्या ये प्रीवियस नॉलेज इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी या नहीं. सो आप ब्लाइंडली ना जाते इस पे. बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की हैं, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना रीजनिंग बेस कर लिया कि भाई क्योंकि केरला हाई कोर्ट में रूहिना फातिमा को अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दिया गया एंड अलेज्ड चार्जेस में रखे गए हैं, इस वजह से यहाँ पे भी आप सीधा उस कैरेक्टर को लायबल कर दो. आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि क्या ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट, क्या ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से ऑब्सीन था. कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट मीन्स व्हाट? इट विल हैव अ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. सो लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द केस, और हम ये डेसिफर करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई कॉन्टेक्चुअल मीनिंग था जो यहाँ पे छिपा हुआ था. द पॉइंट इज एन एक्टिविस्ट allowed her 2 minor children, ठीक है, allowed her body to be used as canvas to paint on by her 2 minor children who were properly clothed. She uploaded this video of hers on an online platform with a message that she intended to normalize the female form for her children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade their mind. An advocate who sees this video registers a case of obscenity against her. Is it a case of obscenity as per the community standard test? First is, this is a pure case of obscenity and she is spreading it. The point is what she intended. So the kind of contextual thing has to be looked at. All right. Next is, this is a pure case of obscenity as well as child pornography, as her children were exposed to her nudity. Again, had the question
बीन टॉकिंग अबाउट हिकलिन टेस्ट, आप 100% ये सारे पॉइंट्स पे जा सकते थे. नेक्स्ट इज, बट द रियलिटी इज दैट द क्वेश्चन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हिकलिन टेस्ट, रादर द क्वेश्चन वाज अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. सो विल गो बाय द लैंग्वेज ऑफ C. This is not a case of obscenity because as per the community standard test, the video must not be seen in isolation but in the contextual setup of the message that the activist has put on normalization of the female's sexuality. So the point is, don't just look at the act in isolation. Although we totally understand that there is a judgment on the same facts, and it will be, a mistake which everybody will jump into it, ठीक है, कि क्योंकि एक verdict already है, so the clear answer is that the lady should be liable for obscenity and child pornography. But the point is, आपको community standard test के हिसाब से देखना था, and passage ने आपको ये समझाया था, don't just look at obscenity in isolation, you need to understand the contextual thing also. अगर तब आपको collectively कोई चीज़ obscene लगता है according to the persuading prevailing norms in the society, then only you can call that stuff as obscene, otherwise no. So you cannot look at it in isolation, you have to take into account all the societal norms and the kind of notions which are prevailing in the society on that point. All right, so something which can be obscene today might not be obscene tomorrow. All right, and accordingly आप इस तरीके से सोच सकते हैं. So with the evolvement of society, with the evolvement of societal norms, these concepts do change. All right, so that was the proper message which was given under community standard test, since the female had a larger meaning attached with her act. All right, so यहाँ पे आप accordingly option number C, the most correct answer, it will be the most appropriate answer. All right, so चलिए इसके आगे. हाँ, so next passage, so now we move on to the next passage, and next passage again, next passage was basically related to the environmental law. ठीक है, हम सबको पता है विशाखापट्टनम इंसिडेंट, ठीक है, स्टायरिन गैस का लीकेज एंड जिसकी वजह से लॉसेस हुए. एंड सी द पॉइंट इज, अब यहाँ पे आपके पैसेज ने ये सारी चीज़ें बताई, एंड आपके पैसेज में 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया है. ठीक है, फर्स्ट इज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल विच बेसिकली सेज, एंड very very important judgment has been mentioned. बहुत ज़्यादा नॉलेज के जोन में नहीं जाना, but this judgment is very important as far as environmental law is concerned, क्योंकि यहाँ पे polluter pays principle का concept propound किया गया था, which is basically that if a person damages or destructs the environment, has the absolute obligation to bear the cost of ameliorating the environment. And through this case law, the apex court also held that the polluter is legally responsible to reimburse the individual sufferers. So see, 2 kind of responsibilities has been laid down. One is contextual, one is conceptual. According to the doctrine of polluter pays, जो भी environment को damage गया वो, plus according to this case law, जो भी रियल लॉसेस हुए लोगों को, ठीक है, वो दोनों ही लॉसेस को कॉम्पनसेट कौन करेगा? वो जिसकी वजह से ये पोल्यूशन किया गया है या जिसकी वजह से ये लॉस क्रिएट किया गया है. सो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये हुआ. नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. आई एम श्योर, अब सी अगेन द पॉइंट इज कि सी प्रीवियस नॉलेज थिंग, अब जिनको भी ये आइडिया होगा कि भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या था. सो वे बैक इन 1868 इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, यहाँ पे क्या बोला गया? इफ आई एम मेकिंग अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ माई लैंड एंड देयर इज something because of my usage of that non-natural thing, there was a scape of loss. All right, so there I will be strictly liable. So in 1868 there was a Justice Blackburn who actually gave this theory of strict liability in the case law of Ryland versus Fletcher. All right, but the point is that strict liability was was subjected to various exceptions also, जहाँ पे कि defendant अपने केस को किसी एक एक्सेप्शन में फॉल करवा सकते थे एंड अकॉर्डिंगली उन्हें डिफेंस मिल जाता. ठीक है, इंडिया में 80s के जोन में बहुत सारे
हेजार्डस केस मतलब हेजार्डस फैक्ट्स के ऊपर केस लॉज आए, जहाँ पे कि जिसके बारे में आप आज तक सुनते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस लॉ है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जहाँ पे जस्टिस PN भगवती ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज, यू नो, इफ देर इज अ हैजार्डस एंटरप्राइजेस, so that enterprises, whatever loss would be, you know, done out of that enterprise function, so वहाँ पे वो इंसान absolutely liable होगा. So वो enterprise absolutely liable होगा. The difference between strict liability and absolute liability is that the strict liability, you know, goes by various defenses as exceptions to the concept, whereas absolute liability is like, you know, minus all those exceptions. So no matter what, I'll be absolutely liable. And for strict liability thing, non-natural use has to be made. That can be done by any individual also, whereas absolute liability presupposes a hazardous enterprises. All right, again there is one more difference, that strict liability, in the concept of strict liability, escape of loss has to be there. ठीक है, so something, I am making a non-natural use of my land, that thing, that loss has to escape from my land to your land, then only you can make me strictly liable. But under absolute liability concept propounded under, you know, MC Mehta versus Union of India by the Justice PN Bhagwati, so यहाँ पे even if there was no escape of that, you know, dangerous thing, but since I was engaged in an hazardous enterprises, I will be absolutely liable, and my liability would not be dependent upon any defenses as such. So no exceptions were given under absolute liability. So guys, accordingly, through this passage we understood three concepts. One is polluter pays principle, ठीक है, कि अगर मैंने डैमेज पहुंचाया आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो डैमेज मैंने मदर नेचर को कॉज किया उसके लिए भी, और जो डैमेज मेरी वजह से लोगों तक पहुंचा है उसके लिए भी. बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी बोर्न बाय मी ओनली. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए लैंड का, स्केप होना चाहिए लॉस का, लेकिन आप स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी रखोगे बट कुछ डिफेंसेस डिफेंडेंट के रेस्क्यू में जा सकते हैं. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो कि इंडिया की थियोरी थी एंड जो कि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस से बाहर निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक पॉइंट ये था कि भाई स्केप हो या ना हो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट समबडी इज रनिंग, यू नो, द हैजार्डस एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज एब्सोल्यूटली लाइबल होगा फॉर एनी लॉस. ऑलराइट, चाहे वहाँ पे एक्सेप्शंस या स्केप हो या ना हो, और मेरा जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगा, लेट्स सपोज अगर वो एंटरप्राइज कोई भी एक्स है, तो उस एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से बन रही है विदाउट एनी एक्सेप्शन. ठीक है, सो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट में ज्यादा स्ट्रिक्टर था. सो स्ट्रिक्टर था कौन सा कॉन्सेप्ट? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप अब ठीक है. सो ऑल राइट, अब इसके आगे अगर बढ़े, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं. ठीक है, सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स विल द कंपनी LG Polymers be liable? So yes, विशाखापट्टनम केस and the hazardous gas leakage was that of styrene gas. So यहाँ पे इस पूरे फैक्ट में कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे? सी, ऑब्वियसली पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आना ही आना है. नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्योंकि स्केप हो चुका है, एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हैजार्डस एंटरप्राइजेस है. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट is as per the polluter pays principle, LG Polymers will be liable to pay amount of money for restoration of environment only, amount of money for restoration of environment, and compensation to individuals who suffered the loss. Compensation to the victims, none of the above. I think by the ये question बहुत ज़्यादा problematic नहीं रहा होगा, because you know passage में clearly it was given that you know a person who finally causes damage to the environment has to bear the responsibility which he has, you know, for the loss which he has caused to the environment, as well as all those people who have suffered losses, the tangible losses. All right, so यहाँ पे आपका option number B is, you know, the safe option. कोई भी इसमें problem वाली बात नहीं है. आप accordingly कहोगे ये B option is the correct option. All right, चलिए next. A company ABC Limited operates
an industrial chemical plant in the city of Azad Nagar. Due to an earthquake on July 22, 2020, the valves of the reactors in the plant get damaged, due to which the operators could not properly transport the hazardous gas for chemical vaporization, resulting in the gas leakage. The gas leakage resulted in the death of 12 workers of the plant and also some people living nearby the plant. In this situation, in order to decipher the liability of ABC Limited, choose the best option. A. So, all right, ठीक है. ABC Limited can be held liable under the principles of strict and absolute liability and polluter pays principle as well. See, ये option इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि strict liability में there were certain exceptions which were given to the defendant and यहाँ पे act of God था, ठीक है. So यहाँ पे because the entire leakage was owing to the fact that the earthquake happened. All right, so earthquake वाले point की वजह से आप strict liability में तो केस को रख नहीं सकते. So option number A आपका रॉन्ग होता है. बी पे जाइए. ABC Limited can be held liable under the polluter pays principle and the principle of absolute liability, but can be exempted under the rule of strict liability. ठीक है. So far, so good. C. ABC Limited will not be held liable under any of the principles. D. ABC Limited will be held liable under strict and absolute liability principle, but the principle of polluter pays will not be applicable to this situation. Why the heck? क्यों नहीं होगा ये liability? ठीक है, so polluter pays भी आएगा, absolute भी आएगा. Yes, strict नहीं आएगा क्योंकि strict में कुछ exceptions हैं and clearly fact state कर रहा है act of God के point के ऊपर. So यहाँ पे yes, आप strict liability में exemption ले सकते हैं, but polluter pays principle and principle of absolute liability तो 100% रहेगा ही रहेगा. So आपका safest option बनता है ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट इज moving on to the next question. The argument of LG Polymers that they did not know that the styrene gas could leak. First, it is a strong argument. See, before I discuss this, one thing is for sure, that there was no concept given under the passage that defendant had to prove the likelihood of his knowledge or something, that he knew or likely to know वाला कोई भी इंस्टेंस नहीं था, जो कि बेसिकली लॉज में कितनी बार होता है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं. यहाँ पे उसे ये पॉइंट प्रूव करना कि मुझे पता ही नहीं था या ये मेरे नॉलेज के डोमेन में नहीं था, विल नॉट कम टू द डिफेंडेंट्स रेस्क्यू. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाले सारे पॉइंट को हटा दीजिए. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाले सारे पॉइंट्स अगर हट जाते हैं, देन वी हैव, यू नो, इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट एंड विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ LG Polymers अंडर एनी ऑफ द प्रिंसिपल. अच्छा, डी भी कह रहा है इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट बट मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल. नो, गो बाय सी, गो बाय सी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी लाइक्लीहुड ऑफ नॉलेज का कोई पॉइंट नहीं आता था. ऑलराइट, सो आपका सेफेस्ट आंसर यहाँ पे सी बन रहा है. ऑलराइट, ठीक है. Next is XYZ is a company operating a pesticide factory in the city of Rampur. On one day, due to the negligence of factory staff, there is a leakage of the pesticide gas, as a result of which many pests and insects which feed on the plantation crops in the nearby farm are killed. There is no harm caused to the people living nearby or the workers of the pesticide factory. However, the leakage was so humongous that it reduced the quality of the air. Just a second. It was so humongous that it reduced the quality of the air in the city, causing breathing problems for the people living around in the area. In this case, XYZ will be absolutely liable but not strictly liable. See, the point is, strict liability में तो ज़रूर आना ही आना है इस केस को, क्योंकि I don't know why, but you know, you can equate this fact and the Ryland versus Fletcher case का fact. क्योंकि Ryland versus Fletcher में what happened was that there was one land, there was next land. यहाँ पे एक huge reservoir dig किया गया because एक humongous quantity of water, you know, flew to the adjoining land, and it was held that, you know, the digging of this huge reservoir was considered as non-natural use of the land. So वहाँ पे it was the situation of water in, you know, in a large quantity. यहाँ पे it is regarding the quality of air. ठीक है. So I think
अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है 100% ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जाता है, ए नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को ही एलिमिनेट कर दिया, दैट कैन नॉट बी योर आंसर। ऑलराइट, बी पे जाइए, XYZ विल नॉट बी लाइबल अंडर द स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बिकॉज द लीकेज ओनली किल्ड द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। नो नो नो, लॉस है बिकॉज इट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एयर। ऑलराइट, सो लॉस है। ऑलराइट, सो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं जाना है, ये भी आप हटा सकते हैं यहाँ से। XYZ's liability under the strict and absolute liability principles will depend upon the inquiry as to whether the leaked pesticide gas was a hazardous substance, activity or chemical or not, and XYZ will be liable under the polluter pays principle. And D है XYZ will not be liable under the polluter pays principle. I think option number C is the safest. Although strict liability में 100% केस होता ही है, क्योंकि absolute liability में यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन सकता है, बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में केस आना ही है, सिंस वी डू नॉट हैव अ क्लियर ऑप्शन ऑन वॉट एवर आई एम सेइंग, सो द बेस्ट ऑप्शन देन गोज बाय सी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो इंक्लूड हो ही गया ना, सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, हाँ, सो that takes us to the end of the last passage and this is the new passage now, ठीक है। this passage basically talks about you know what we call as principle of natural justice, ठीक है। so this is derived from the word just, natural, ठीक है, रोमन लॉ दैट इज, एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉमन लॉ एंड मोर प्रिंसिपल्स, बट इट इज नॉट कोडिफाइड, एंड दैट वाज वन ऑफ द, यू नो, द बेसिक ट्रेट ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम, दैट largely laws are not codified under the common law regime, whereas under the civil law regime the legal system went for the codification of law. So basically that is the difference between two legal system if you look at the legal system across the globe. All right, so see, the point is natural justice का जो principle है, it is not codified under any law. I cannot tell you that these are the sections which are talking about, you know, the natural justice. All right, so it is not codified, but then it is the crux, or what you call as, you know, backbone of any law. All right, so basically under the natural justice there are 3 rules, ठीक है। फर्स्ट, जिसको कि हियरिंग रूल कहा जाता है, जो कि एक मैक्सिम के द्वारा आप समझ सकते हैं, विच इज ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, इसका मतलब क्या है? नो वन शुड बी लेफ्ट unheard, no one should be condemned unheard, या both the parties have the equal right to represent or, you know, present their case. All right, so जिसमें कि right of cross examination, right to defense, everything comes into the picture. So अगर दो लोगों के बीच में एक केस है तो दोनों के पास equal opportunity होना चाहिए to present their case. All right, so पहले रूल को हमने बोला hearing rule, जहाँ पे fair opportunity मिले to express his point of view, to defend himself. Second is known as bias rule. All right, so सेकेंड को एक मैक्सिम, अगेन एक मैक्सिम है, विच इज आई थिंक जिन्होंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जुडेक्स नीमो जुडेक्स कॉजा जुआ। इसका मतलब होता है वन शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन हिज ओन कॉज, ठीक है, बिकॉज देयर कैन बी, यू नो, लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस दैट कैन, यू नो, कम इनटू द माइंड, लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिविटी। ऑलराइट, सो सब्जेक्टिवली हम लोग नहीं जा रहे हैं एज टू वेदर दैट पर्सन वाज बायस और नॉट, बट अगर एक लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस भी आ सकता है और वहां पे आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट अप्लाई करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है रीजनेबल पर्सन्स टेस्ट, ठीक है। So let's suppose I am a judge and I am, you know, a shareholder of a company also, and let's suppose उसी कंपनी का मैटर मेरे कोर्ट रूम में आता है, मेरे सामने वो केस लिस्टेड होता है। ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक हिच बराबर ही सही, एक ग्रेन बराबर ही सही, बट बायसनेस आ सकता है, सिंस आई ऑल्सो हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। ऑलराइट, सो दैट थिंग हैज टू बी, यू नो, समवेयर इग्नोर्ड, क्योंकि जब आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, you should not be interested or you should not be biased in that case, be it personal, be it pecuniary, or be it subject matter. All right, so second rule is what is known as bias rule, and जिसका मैक्सिम हमने क्या समझा? इसका मैक्सिम हमने समझा है नीमो जुडेक्स कॉजा जुआ। सो पहला पॉइंट था ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जो कह रहा था भाई फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए दोनों पार्टी को, ताकि दोनों ही अपने अपने केस लॉ को, अपने अपने केसेस को डिफेंड कर सके, प्रेजेंट कर सके। दूसरा पॉइंट है बायस रूल का, जहाँ पे ये बोला गया कि एक डिसाइडिंग ऑफिसर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद अपने केस लॉ में, खुद अपने केस में
बायस नहीं हो सकता। वो बायसनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, कितनी बार वो पर्सनल बायस हो सकता है, वो पेक्यूनरी बायस हो सकता है, वो सब्जेक्ट मैटर का बायसनेस हो सकता है। ऑलराइट, एंड थर्ड व्हाट इज नोन एज रीजन्ड ऑर्डर। इसका एज सच कोई रीजन डिसीजन भी कहते हैं, रीजन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। तभी आप कितनी बार देखेंगे अगर कोई जजमेंट आता है तो इट्स नॉट ओनली लाइक आई हैव डिसाइडेड दिस, नो, यू हैव टू डिसाइड and you have to substantiate your decision with the reasons. All right, so you have to apply, you have to tell that these were the reasons because of which I arrived at this conclusion. ठीक है, सो जब भी कोई जजमेंट होगा, जब भी कोई वर्डिक्ट पास होगा, जब भी कोई डिसीजन आउट होगा, तो वो डिसीजन तो होगा कि कौन जीता कौन हारा, बट आपको एज इन जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिसने उस केस का डिसीजन दिया है, उन्हें अपने रीजंस को भी साइट करना होता है। सो गाइस, बेसिकली क्या हम लोग समझ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज अ ट्रेट ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम, जहां पे एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कोडिफिकेशन, अनकोडिफिकेशन का। सो बेसिकली ये कोडिफाइड नहीं है, ये किसी भी लॉ में किसी भी सेक्शन वगैरह में नहीं दिया गया है, बट दीज आर प्राइमरली 3 इन नंबर। 1 व्हाट इज नोन एज ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, नेक्स्ट व्हाट इज नोन एज नीमो जुडेक्स कॉजा जुआ, एंड थर्ड दैट इफ एनी डिसीजन इज देयर दैट हैज टू बी रीजन्ड डिसीजन। ठीक है, सो दैट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द रीजंस व्हाई यू अराइव्ड एट दैट कंक्लूजन, दैट थिंग हैज टू बी क्लियरली मार्क्ड आउट। ऑलराइट, सो चलिए इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ऑलराइट, so see, excerpt was taken from the blog I Pleaders. So guys, these things are very very important. Have a very very keen sight on these particular things कि ये excerpt कहाँ से लिया गया है, उस चीज को जरूर अपनी तैयारी का हिस्सा रखिएगा। Get into the habit of reading, ठीक है, that is like the savior point of you पीपल। सो आप हमेशा ये चीज़ समझिएगा कि कुछ लीगल चीज़ों का आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसे कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, क्योंकि उसके बेसिस पे जो आपका विजडम आ रहा है, दैट ऑल्सो एट टाइम्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड, नीमो जुडेक्स इन कॉजा जुआ और द प्रिंसिपल दैट नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। सो हमने समझा नीमो जुडेक्स कॉजा जुआ इज द बायस रूल। ऑलराइट, सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स इज अ पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन अ PSU, मिसेस वाई हु इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, सो एक्स इज द हस्बैंड, वाई इज द वाइफ, एंड देयर इज वन ऑफ द एम्प्लॉय हु इज मिस ए। मिस ए फाइल्स द कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर एक्स हु हैपन्स टू बी द हस्बैंड गाइज, सो फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिफोर द ICC, which is headed by Mrs. Y. So okay, fine. So wife is heading the entire inquiry, and the inquiry is basically keeping the husband, so all the charges were levied against the husband only, and the wife is taking up that inquiry. Just think about it. Don't you think the wife will get that grain of biasness because the next person against whom all the allegations are there happens to be her husband? So just look at it objectively. Just apply the layman's mind. Just look at the approach from your reasonable person's view, and you will understand that on what ground. So question is now, on what ground Mr. X may challenge her findings? Mrs. Y is an employee of the same institution that the inquiry should have been conducted by person outside the institute. ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है complaint was filed by female employee, so the inquiry must have been conducted by male employee. ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है Mrs. Y is a wife and she holds a personal bias in the case, so the inquiry should not have been conducted by her. Very true. Mr. X being the accused should have conducted the inquiry himself. Completely illogical. All right, safest answer option number C. All right, चलिए so आगे बढ़ते हैं। Mr. A is a judge. He is also the landlord of Mr. B, who resides in an apartment owned by Mr. A. So okay, fine, we have a same person, but that person has two different respective capacities. One that he is a judge, and next that he is a landlord also. Of whom? Of Mr. B. All right, so due to the non-payment of rent for 3 consecutive months, Mr. A served an eviction notice to Mr. B. Now choose the most appropriate option amongst the following. Easy question
क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट को समझ लीजिए, एक ही इंसान डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर सकता है. लेट्स सपोज आई एम बिफोर यू एज अ लॉ टीचर, बट देन आई एम ऑल्सो advocate. I have a license at the bar council also. So when I'll be appearing in the court of law, there my capacity is with respect to an advocate. Jab I am in front of you, I am taking a class. There I have a different capacity of being a law teacher. So these two are different capacities, but played by a single individual. So यहाँ पे जो question है, यहाँ पे भी there is a character who has two respective capacities, different capacities. One that he is a judge, and next that he happens to be landlord also. हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है. And जो eviction का उसने notice दिया, वो as a judge उसने नहीं दिया है, वो as a landlord उसने दिया, क्योंकि he has a right of of rent. तो टेनेंट ने अगर रेंट नहीं दिया तो ही सर्व्ड अ एविक्शन नोटिस व्हिच ही कैन एनीवेज. ठीक है, सो यहाँ पे द कैपेसिटी वाज आई थिंक एज अ लैंडलॉर्ड एंड नॉट बीइंग अ जज. सो आई थिंक यहाँ पे द ऑप्शन इज वेरी क्लियर. बट चलिए फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं. बीइंग अ जज हिमसेल्फ मिस्टर ए कैन नॉट इशू सच नोटिस ऑफ एविक्शन. कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं है, दो डिफरेंट कैपेसिटीज हैं. नेक्स्ट है मिस्टर ए कैन इशू सच नोटिस बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी एज अ जज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लैंडलॉर्ड. नो कॉम्प्लिकेशंस हियर. सच नोटिस इज इलीगल एज मिस्टर बी was not given an opportunity to present his case. अभी सिर्फ eviction का नोटिस प्रेजेंट किया गया, सर्व किया गया. ऑब्वियसली उसके आगे कोर्स ऑफ लॉ आगे बढ़ेगा एंड जहां पे टेनेंट का भी पॉइंट आएगा एंड उसे भी अपना केस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द द हियरिंग रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. डी ऑप्शन इज सेइंग मिस्टर ए issued such notice in his personal capacity as a landlord and not being a judge. So ये बिल्कुल सही था. बाकी कोई भी ऑप्शंस आपको लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जा रहे थे एनीवेज. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट, which of the following is not in violation? So guys, ये इस टाइप के questions कितनी बारी because we do understand since I'm also a law student, so ऐसे questions में कितनी बार haste की वजह से candidates गलतियां कर जाते हैं. At times आप बाद में realize करते हो कि ओहो ये question तो not के regarding पूछा गया था. So आपको ये चीज़ें भी समझनी होती हैं. So उतने palpitation में one has to control their nerves also so that what you read is correct, because what you read is what you are going to apply. ठीक है, so that is very important guys. So the question was regarding इन सब में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में नहीं है. ठीक है, so पहला है withholding of an increment of a public servant without giving him an opportunity to defend. It is a clear violation of natural justice कि उसे एक मौका मिलना चाहिए था अपने केस को प्रेजेंट करने का, अपने आप को डिफेंड करने का. ऑलराइट, सो इसे आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में मानोगे. नेक्स्ट is non-renewal of a contract of employment of an employee after, this was the catch guys, after the period of contract is over. Once a contract is terminated, I hope आप समझते हो, the contracting partners are free, absolutely free. So there the different course of action can be taken by either of them and there is nothing mandatory, there is nothing, no such mandate that after contract getting terminated one partner has to give opportunity to the next partner. Absolutely no, because after the period of contract is being talked about, then the contracting partners are absolutely free, they can choose their own course of action. So this is this is like, it is not in principle, not in violation of principle of natural justice. All right, next is initiating a departmental inquiry against a public servant without giving him an opportunity to submit representation during such inquiry. Again ये पॉलिटी में भी एक आर्टिकल है, बट चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे इस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. बट कमिंग बैक, सो पब्लिक सर्वेंट है, विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है, एब्सोल्युटली प्रिंसिपल जस्टिस के वायलेशन में है. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ द अबव जा नहीं सकता क्योंकि ए एंड सी कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे. जो बचा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो. ऑलराइट, सो चलिए इसके आगे. On the basis of your understanding about natural justice in the passage above, state which of the following is true. ठीक है, सो आपको अब इन्फ्रेंस वाले ये क्वेश्चन है जहाँ पे यू नीड टू अप्लाई एंड द एग्जामिनर विल बी चेकिंग अपॉन योर विजडम, व्हाट यू गैदर्ड आफ्टर रीडिंग द पैसेज. ऑलराइट, सो फर्स्ट इज adherence to the reasoned decision rule is not required if other two rules are complied with.
Compliance of bias rule itself rejects the need of the hearing and the reasoned decision rule. The principle of natural decision is incomplete without the compliance of any of its rules. The reasoned decision rule is a substitute for the bias rule. See, nowhere in the passage was like कि ये तीनों rules में से either और वाला relation चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था. ये in toto चलता है. Collectively जब आप इन तीनों चीज़ों को collectively gather करते हैं तब जाके principles of natural justice combined way में आता है. So ऐसा कोई either और या alternative वाला कोई भी point नहीं था. Rather it was in addition of all these factors that the concept of natural justice largely comes into the picture. So obviously you will go by option number C, which is like जहाँ पे ये बोला जा रहा है that principle of natural justice is incomplete without the compliance of any of its rules. So be it bias rule, be it hearing rule, or be it the reasoned decision rule, all these three complement one another, and when all these three come up, then the concept of natural justice is being followed automatically comes up. So यहाँ पे alternative में नहीं चलना, यहाँ पे addition में चलना है. ये तीनों points आने चाहिए, तब जाके natural justice का पूरा concept comes into the picture. So all right guys, with that ये passage भी हमारा end कर रहा है.